तो आज हमारी कौन सी है, टाइप नंबर 2। ठीक है, तो ये टाइप 2 जो है आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। कल ही मैंने आपको इसके फॉर्मूले के बारे में बता दिया था। तो क्या थी टाइप 2? कल मैंने आपको बताया था कि साइन इनवर्स साइन एक्स, कोस इनवर्स कोस एक्स, टेन इनवर्स टेन एक्स, और कोट इनवर्स कोट एक्स, और कोसेक इनवर्स कोसेक एक्स, ये सब जो है वो एक्स है। और मैंने आपको इनके इंटरवल्स भी बता दिए थे। ठीक है, तो आज हम लोग उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक, तो पहला क्वेश्चन मैंने आपसे बताया था कि साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3, आंसर पाई बाई 3 हो जाएगा। अच्छा, क्योंकि मैंने बताया था ये किसके मिडिल में होना चाहिए, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 होना चाहिए। तो देखिए इसका आंसर किस में आ रहा है, इसी इंटरवल में आ रहा है, मतलब ये ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट अगर मैं इस क्वेश्चन को देखता हूं साइन इनवर्स साइन 2 पाई बाई 3, तो आप क्या ऑब्जर्व करते हैं इसमें, क्या ऑब्जर्व करते हैं बताइए। तो अगर ये 2 पाई बाई 3 होना चाहिए, बट प्रॉब्लम ये है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट है, जबकि मैंने आपसे बताया था कि साइन इनवर्स वाला जो क्वेश्चन है वो या तो फर्स्ट में होना चाहिए या फिर फोर्थ में होना चाहिए। जबकि ये किस में है बच्चों, अभी किस में शो हो रहा है, जल्दी से बताइए। ये सेकंड क्वाड्रेंट है। 2 पाई बाई 3 120 डिग्री होता है ना, तो 2 पाई बाई 3 इज 120 डिग्री। तो सो वी विल रिड्यूस 2 पाई बाई 3। ओके, तो 2 पाई बाई 3 रिड्यूस कैसे होगा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाने के लिए इसको ऐसे लिख देते हैं। अब आपको पता है ना कि साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा, साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। सो साइन इनवर्स साइन पाई बाई 3, देन वी गेट sin pi pi by 3, sin 180 minus theta is sin theta, and we get sin pi minus pi by 3 sin pi by 3. Answer is pi by 3, which is also belong to first quadrant. So our answer is pi by 3. Pi by 3 is between minus pi by 2 to plus pi by 2, belongs to first quadrant. Already tell you कि sin inverse वाले जो क्वेश्चन है वो किस में होने चाहिए, फर्स्ट में होने चाहिए या फोर्थ में होने चाहिए। Is it clear? Now next question is cos inverse cos 2 pi by 3 is equals to 2 pi by 3. This is the second quadrant. 2 pi by 3 is 120 degree, and cos inverse belongs to first either second. So our answer is 2 pi by 3 is okay, because this belongs to second quadrant. Our answer is 2 pi by 3. Is it clear? Next question is tan inverse tan pi by 4. Answer is pi by 4. Pi by 4, this question is related to tan inverse ना, तो tan inverse is belongs to either first quadrant or fourth quadrant. So our answer is pi by 4 is correct, because this belongs to minus pi by 2 to plus pi by 2, first quadrant. ठीक है, ओके। नाउ अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोस इनवर्स कोस 7 पाई बाई 6. 7 पाई बाई 6 इज पाई बाई 6 इज 30, एंड 7 इंटू 30 इज, बताइए जल्दी से, 7 इंटू 30 210. 210 नॉट 210 इज बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट, एंड ऑलरेडी टेल यू कि नो इनवर्स फंक्शन बिलोंग्स टू थर्ड क्वाड्रेंट. Not any inverse function belongs to third quadrant, but this shows that third quadrant. Clear? So we will reduce cos 2 pi minus pi by 6. 2 pi minus pi by 6 is 7 pi by 6. We know that cos 360 minus theta, cos 360 minus theta fourth quadrant is cos theta. So cos inverse cos 5 pi by 6. Answer is 5 pi by 6. 5 pi by 6 means 150 degree. And we know that always cos inverse function belongs to second quadrant. 5 pi by 6 is second quadrant. So answer is, our answer is
belongs to 0 to pi. So answer is 5 pi by 6. Clear? Is it clear? इस तरीके से हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्वेश्चन इज साइन इनवर्स साइन माइनस 600. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, we know that here the formula is sine minus theta is minus sine theta. So sine inverse minus sine 600. Clear? Now we will find the value sine 600. So sine 2 into 360 which is 720 minus 120 which is 600. Is it clear? And sine 360 minus theta is minus sine theta. And minus sine 120 is 180 minus 60. Again sine 180 minus theta is plus sine theta. So sine 60 degree minus root 3 by 2. Is it clear? Now sine inverse minus root 3 by 2. And also we know that sine inverse minus theta is minus sine inverse theta. Is it clear? Now we will get minus will be outside, sine inverse root 3 by 2. Clear? Sine root 3 by 2 is, okay, tell me, sine inverse root 3 by 2 is 30 degree or 60 degree? 60 degree. 60 degree, which means pi by 3 also belongs to minus pi by 2 to plus pi by 2. So our answer is okay, minus pi by 3. Clear? So this way we can solve any type of inverse question. Now we are going to second type. We are going to second type questions. Clear? Second type, type and subtype second. Type second, subtype is second type. Now we will discuss type second and also type subtype is second type. Okay, to see this, type second is like this. Okay, tell you, see this, type second is sine inverse sine 10, cos inverse cos 10, or 10 to make issues. So we change the method type okay, we will write again cos inverse cos 10, sine inverse sine 10, or cos inverse cos 2, or sine in tan inverse tan 10, any number. So here we see that 10 is not in radian form. 10 is not a radian form, and 20 is also not radian form. 20 we can write sine inverse sine 20. It shows that the angle are not in radian form, angles are in number form. So we will discuss, we will solve by the angle in radian form. Okay, now see this, we know that pi is 3.14. Is it clear? Pi is 3.14. So pi by 2 is 3.14 divided by 2. We will have 2 1 ja 2 and 2 5 ja 10 and 2 7 ja 14. So pi by 2 is 1.57. Clear?
and minus pi by 2 is minus 1.57. Clear? So sine inverse sine x, tan inverse tan x, cosec inverse cos x is x. Clear? Belongs to minus pi by 2, 2 plus pi by 2. We know that the intervals of sine inverse sine x, tan inverse tan x, cosec inverse cos x belongs to minus pi by 2 to pi by 2. It means in number form minus 1.57 to 1.57. Clear? And also cos inverse cos x, sec inverse sec x, sec inverse sec x, and cot inverse cot x, all are x and belongs to 0 to pi in radian form, but in number form 0 to 3.14. Is it clear? Okay. Then we will solve. First question is sine inverse sine 1. 1. So 1 is belongs to minus 1.57 to 1.57. Clear? So answer is 1. But sine inverse sine 2 is equals to 2, which is not belongs to minus 1.57 to 1.57. 2 is more than 1.57 now. So we will reduce 2 in between minus 1.57 to 1.57. Is it clear? So 2 is near about 3.14 minus theta. Is it clear? 2 is near about 3.14 minus theta. Then theta is equals to 3.14 minus 2, which means pi minus 2. Clear? Now sine inverse sine 2 is equals to sine inverse sine pi minus theta. Pi minus theta. Clear? Sine inverse sine 180 minus theta is sine theta. Sine inverse sine theta is equals to theta. ठीक है? Clear? अब theta is pi minus 2. Clear? Pi minus 2. We will check pi minus 2 belongs to 1.57 comma 1.57. Pi is 3.14 minus 2. Answer is 1.14, which belongs to minus 1.57 to 1.57. So as our assumption pi minus 2 and our answer is correct. So pi minus 2 is a correct answer. Here we have to check our answer belongs to appropriate interval. Clear? Next question is cos inverse cos tan. So tan is equals to 3.14. Near values is 3 into, check that, 3 3s are 9. Okay, 3 4s are 12, 3 1s are 3, 5 and 3 3s are 9, 9.52. Clear? Three 4s are 12 and 3 1s are 3 and 4, so 9.42. Clear? Plus theta or minus theta? Plus theta. Clear? So 3 into 3.14 tan is equals to 3 pi plus theta. So theta is equals to 3 pi minus 10. Now we will solve cos inverse cos 3 pi plus theta. Now we will check 3 pi plus theta in which quadrant. See this 2 pi
3 pi plus theta belongs to third quadrant, and in third quadrant cos is negative. Cos is negative, clear? And cos inverse minus theta is equals to pi minus cos inverse theta, means pi minus cos inverse cos theta, which belongs to pi minus theta, and theta is 3 pi minus tan, which means tan will be positive, tan minus 3 pi. अब चेक करते हैं, we will check tan minus 3 pi is appropriate or not. So we will check tan minus 3 pi. Okay, चेक करके देखते हैं. tan minus 3 into 3.14. तो tan minus 3 into 3.14 9.142. ओके, तो अब इसे माइनस कर देते हैं. 10.00 9.42 8 5.58. Clear? Which belongs to 3.1420. 3.1420. इट मीन्स, देखिए हमने चेक करना था कि ये जो वैल्यू है वो हमारी बिलोंग्स करती है कि नहीं करती है. तो देखिए हमने चेक कर लिया, आंसर इज 0.58. 0.58 इज बिलोंग्स टू. ओके, देखिए पीछे चेक करते हैं. कोस इनवर्स ऑलरेडी टेल यू बिटवीन 0 to 3.14. देखिए कोस वाले क्वेश्चन जो हैं शुड बी बिलोंग्स टू 0 to 3.14, और अवर कैलकुलेशन आर बिलोंग्स टू 0 to 3.14. सो अवर आंसर इज करेक्ट. क्लियर? दिस वाज सेकेंड टाइप. दिस वाज सेकेंड टाइप क्वेश्चंस. पार्ट 2, सेकेंड टाइप. Part 2. Now we will discuss second type, part 3. Second type, part 3 is very, very important. Okay, next type is neither radian nor number. Neither radian nor number. Third type are this type of questions which shows in algebraic expression. Third type is shows in algebraic expression. So we will substitute in trigonometric form, and which is very, very important. Okay, so we have to remember expression. Now substitution, we will make rows and columns. Substitution, and explanation. Explanation, clear? Expression, substitution and explanation. First expression is a square plus x square. So we will substitute x is equals to a tan theta or a cot theta, either a tan theta or cot theta as per question. So a square plus a square tan square theta. A square is common, 1 plus tan square theta, which is sec square theta. Clear? The first type is a square plus x square, and second is a square minus x square. We will substitute x is equals to a sin theta, a cos theta. A is a square. अगर सपोज 4 minus x square है तो x के प्लेस पर क्या करेंगे,
2 sin थीटा, ठीक है। देन सब्स्टिट्यूट a square sin square theta, we will substitute x is equals to a sin theta, check that, or a cos theta, a square is common, 1 minus sin square theta, which is a square cos square theta, clear? Now third is very important, a plus x or a minus x, we will substitute x is equals to a cos theta और a cos थीटा, क्लियर? सो अगर हम a cos 2 थीटा सब्स्टिट्यूट करते हैं तो a cos 2 थीटा, a इज कॉमन, 1 प्लस cos 2 थीटा, 1 प्लस cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा, क्लियर? एंड अगर सपोज ये 1 माइनस cos 2 थीटा होता तो क्या बन जाता ये 2 sin square theta. These are the three type of expressions. We will substitute this type, but in some cases these are not acceptable. Some are acceptable. We will discuss that type of questions in particular cases. Clear? Now we will solve a single question, tan inverse x divided by a square minus x square. So we will substitute, इसे simplify form में करना, write the following function in simplest form. The question is in simplest form and we have to convert this algebraic function in tan. We have to convert this algebraic function into tan form. Is it clear? So put x is equals to a sin theta or a cos theta? A sin theta. Is it clear? Put x is equals to a sin theta. So x upon a is equals to sin theta, which is useful in last form. In last we will substitute, replace the value of theta, which is sin inverse x upon a. So tan inverse x is a sin theta, clear? Now a square minus a square sin square theta, and tan inverse a sin theta, a is common, which will outside the square root, and 1 minus sin square theta, clear? Cancel. Tan inverse sin theta, 1 minus sin square theta is cos square theta, square से root cancel, which is cos theta. It will tan inverse tan theta is equals to theta. देखिए हमने इस algebraic expression को convert कर दिया in tan form. देखिए लास्ट में tan inverse tan theta. Is it clear? Then replace the value of theta. Already tell you theta is sin inverse x upon a. So we are observing that in inverse trigonometric function in bracket we will convert in outside inverse form, like this is tan inverse, so we will convert in algebraic function in tan form, so that tan inverse tan theta can be cancelled. ओके तो हमने देखा कि इस टाइप से हम लोग किसी भी क्वेश्चंस को अगर ट्राई करेंगे तो सॉल्व हो सकता है. क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एंड देन वी विल डिस्कस in next class. Last question is tan inverse a minus x upon a plus x. Already tell you in place of x is equals to a cos 2 theta or a cos theta put करते हैं, x is equals to a cos 2 theta, तो x upon a is equals to cos 2 theta, 2 theta is equals to cos inverse x upon a, theta is equals to half cos inverse x upon a. Clear? So tan inverse a minus a cos 2 theta and a plus a cos 2 theta. Is it clear? Now tan inverse a is common, so 1 minus cos 2 theta, 1 plus cos 2 theta. Already tell you कि 1 minus cos 2 theta is equals to, और देखिए cos 2 theta is equals to
1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस कोस 2 थीटा, एंड 2 कोस स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस कोस 2 थीटा. क्लियर? सो tan इनवर्स 1 माइनस कोस 2 थीटा is 2 sin square theta, 2 sin square theta, 2 cos square theta, 2 is cancel and square also cancel, which shows tan inverse tan theta. So tan inverse tan theta is tan theta. Theta is, replacing the value of theta, half cos inverse x upon a, which is the required answer. So by this way, by this type or by the substitution, we can solve any type of inverse function. In bracket shows algebraic fractions. Clear? Okay, तो अब हम लोग जो है इसका नेक्स्ट फॉर्म जो है नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे. ठीक है, तो तब तक के लिए आप ट्राई करें इन्हीं क्वेश्चंस को, आप इनको अच्छे से वीडियोस को देखें. ठीक है, सो आप हर टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कैपेबल हो जाएंगे. अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइप सीखेंगे. ठीक है, ओके, दैट्स ऑल, सी यू इन नेक्स्ट क्लास.